Okay. So guys, we are starting with today's session. So today what we will do, we will discuss how we can write options. Okay, writing option means selling option. आप option sell करके, okay, consistent passive income आप कैसे generate कर सकते हैं? Okay, that we will discuss. But let me, give you the brief idea about returns. Okay, I will be very realistic here. What I will show you how you can earn, maximum up to 2%. Okay, 2% per month maximum. Okay, so if I talk about range, so in 1 month you can easily earn anywhere between 1.5 percentage to 2%, depend on your capital. आप कितना capital invest करें उसके ऊपर depend होता है, but maximum safe side आप अपने capital को भी protect रखेंगे. Safe side आप 2% easily निकाल सकते हैं per month on your capital. तो अगर आप इसको annually convert करोगे, if you do this into in 1 year, तो आपको लगभग 18 to 24% का रिटर्न मिल जाता है. एंड बिलीव मी, 18 to 24% इज नॉट अ बैड रिटर्न, इट इज अ वेरी गुड रिटर्न. अगर इसको आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से, ओके, पीपीएफ स्कीम से, रिकरिंग डिपॉजिट से, इनके साथ आप कंपेयर करेंगे तो दिस इज वेरी गुड रिटर्न. सो ऑन एन एवरेज बैंक, एफडी, आरडी, पीपीएफ में आप 6% सालाना कमा सकते हैं. ओके, एवरी ईयर 6 to 8% यू कैन अर्न, बट हियर यू कैन डेफिनेटली अर्न बिटवीन 18 to 24%. तो उस हिसाब से आपको देखना है. और दूसरा, अपने को कैपिटल सेफ भी रखना है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस रेंज 1.5 to 2%, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी सेफ. आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहेगा. अगर आपको और ज्यादा रिटर्न चाहिए, इफ यू वांट टू अर्न मोर देन 2% इन अ मंथ, देन यू हैव टू टेक अ रिस्क. थोड़ा फिर इसमें आपको रिस्क ज्यादा लेके यू कैन अर्न मोर रिटर्न. ओके, बट आई विल शो यू व्हाट आई बेसिकली डू पर्सनली. सो वी हैव अ फर्म कॉल्ड श्री साई इन्वेस्टमेंट्स. तो श्री साई इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली we basically invest, okay, clients money in option writing strategy. तो जो मैं पिछले एक साल से लगभग करते आ रहा हूँ, that I will show you. Okay, and this is very safe written. And market कैसा भी हो, bullish हो, bearish हो, consistent, I'm saying consistent, you will make 1.5 to 2% all 12 months. Okay, now this is the June series. Okay, June 2022, you can see on screen. So as of now, I have taken these 6 trades personally. ठीक है, ये मैंने खुद trades लिए. Divi Slab, you can see very first trade आपको दिख रहा होगा, Divi Slab. Okay, Jindal Steel. Okay, Mahindra and Mahindra, Metropolis. Okay, Pidilite, Tata Steel. So you can see how many positions I have as of now. 6. Okay, 6 positions है. इन 6 के 6 स्टॉक्स में हमने क्या किया, we have sold options. Okay, हमने options sell किए. तो आउट ऑफ 6 स्टॉक्स यू कैन सी 5 में तो कॉल ऑप्शन ही सेल हुआ है. ओनली इन 1 स्टॉक यू कैन सी वी हैव सोल्ड पुट ऑप्शन. ओके, इन महिंद्रा एंड महिंद्रा यू कैन सी वी हैव सोल्ड पुट ऑप्शन, 800 पुट ऑप्शन. एंड यू कैन सी दो मार्केट इज नॉट गुड, ओके, मार्केट इज बियरिश, बट ये स्टॉक आप देखेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा. सो हाउ टू डू स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस आप ये स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. Okay, so first I will explain you Tata Steel. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं what we have done in June series. We have sold Tata Steel 1500 call option. Now we will try to understand the logic. Okay, why we have picked this stock. ये stock हमने pick क्यों किया, Tata Steel, and इसमें हमने call option ही क्यों sell किया. So I will also show you, simple price action analysis. How you can do price action analysis. When I'm saying simple price action analysis means आपको ये देखना है, सपोर्ट, कोई भी स्टॉक अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो उसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है. ओके, उसमें हम ऑप्शन सेल करेंगे ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऑन वीकली टाइम फ्रेम. व्हेनेवर यू सी कोई भी स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओके, कुछ भी ब्रेक कर रहा है, देन यू हैव टू कीप दैट स्टॉक इन वॉच लिस्ट एंड उसमें हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं. तो ये एक आप सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस देख सकते हैं. सेकेंड, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो look for the trend. स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, whether stock is in uptrend, downtrend. तो वो आप ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे, with the help of moving average. So again, on daily time frame, what you can do, you can plot or you can add 20-50 moving average. Okay, 20 moving average, 50 moving average, वो आप ऐड करेंगे तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा. So ये भी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. So जब मैं ग्राफ एनालिसिस करता हूं while selling options, यही 2 चीजें आपको ध्यान में रखती हैं, सपोर्ट ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, और स्टॉक का ट्रेंड क्या है, वेदर स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड.
ये दो चीजें आपको ग्राफ पे देखनी होती है। थर्ड, तीसरी चीज व्हाट वी विल डू, वी विल सी ऑप्शन चेन एनालिसिस। ओके, सो आई विल आल्सो गिव यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो जब आप ऑप्शन डेटा देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है कहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, कहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। तो वो इंफॉर्मेशन भी अपने को हेल्प करती है काफी। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ओके, लेट मी आस्क ऑल फ्रॉम ऑल ऑफ यू, अगर आपका व्यू बेयरिश है, ओके, इफ यू हैव अ बेयरिश व्यू, यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइजेस नीचे जाएंगे, so what you will prefer, you will prefer to sell call option or you prefer to sell put option? Okay, हम लोग ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस सेशन इज ऑल अबाउट ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन सेलिंग। तो मुझे आप बताइए, अगर आपका व्यू बेयरिश है, यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइजेस विल फॉल, सो यू प्रेफर टू सेल कॉल ऑप्शन और यू प्रेफर टू सेल पुट ऑप्शन? करेक्ट। सो अगर आपका व्यू बेयरिश है, वी विल सेल कॉल ऑप्शन, परफेक्ट। if view is bullish, if view is bullish, then what we will do, we will sell put option. Okay, you can write down somewhere, अगर आपको नहीं पता है तो आप कहीं पर लिख लीजिए। if you know this, okay, keep this in mind, you will sell call option when view is bearish and you will sell put option when view is bullish. So again you can see 6 stocks, out of 6 stocks in only one stock we have sold put option because my view is bullish on this counter, Mahindra and Mahindra. Rest all stocks you can see I have sold call option because the view is negative or the view is bearish. So let's talk about Tata Steel. Okay, Tata Steel mein why we have sold call option, this we will discuss, and how to select strike price. Okay, strike price selection bhi काफी important hai. How to select strike price, this also I will show you. Okay, so first what I will do, I will quickly open the graph of Tata Steel. Now you can see what this counter did on daily time frame. Okay, this is Tata Steel on daily time frame. Okay, you can clearly see there is a big candle, okay, big bearish candle, which break the support. Now this happened in the month of May, okay, in last month 2022. तो ये स्टॉक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले last 1 year से, okay, since last 1 year, you can see this stock was taking support near 1010 level. Okay, you can see this, ये जो ब्लैक लाइन है इसकी लेवल आप एक्सट्रीम, इसकी वैल्यू आप एक्सट्रीम राइट में देख सकते हैं, इट इज 1010। तो पिछले एक साल से, सिंस लास्ट 1 year, दिस काउंटर वाज टेकिंग सपोर्ट नियर टू 1010 लेवल, एंड फाइनली यू कैन सी व्हाट हैपेंड ऑन 23rd May 2022, we got a very big bearish candle, okay, which break the support. And why we got this big bearish candle, here you can read, because of the news of export duty on steel products. So किसी को भी पता है आप में से, do type in chat box, are you aware of in steel products there was export duty seen because of this, you know, all steel stocks went down? Okay, do type in chat box if you track news. Okay, Arun is saying yes. तो आपको न्यूज पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल न्यूज, ओके, दिस वाज अ वेरी बिग न्यूज, मेजर न्यूज. So on that day, you can see we got a break, gap down opening. Okay, I will quickly open the graph of Tata Steel here, and let me show you gap down opening. Okay, कितने से stock already नीचे open हुआ because of this news, because this is not a good news. अगर export duty increase होगी तो इससे क्या होगा, export restrictions, exports कम हो जाएंगे. Okay, so this is the candle. So this was 23rd May, and one day before, okay, you can see this is 20th May. So 20th May पे आप देखेंगे the stock price closed at 1120. On 20th May, stock price closed at 1120. Next day, you can see the opening is 1050. Okay, on 20th May, 1120 was closing. Next day, you can see the opening is 1050 almost, and stock closed at 978. So if I talk about closing to closing, it was at 12.61 percentage point. Okay, almost 12.5%. You can read the number. यहाँ से आप read कर सकते हैं. Okay, when I place a cursor, you can see on 23rd में ये stock कितना गिरा? 12.61 से गिरा because of negative news. So the view is completely bearish. पिछले एक साल का support भी break हुआ है.
So what we will do, we will simply sell call option. Right now which call option we will select? Okay, but before that, let me show you option chain. Once you select the stock, एक बार आपने select किया stock, after that what we will do, we will do the option chain analysis. So why I selected this Tata Steel? Because of the support breakdown on this news. Now second step, what we will do, we will do the option chain analysis. So when this happened on 23rd May. Let me show you calendar now. Okay, so this is May series. Okay, 23rd May was Monday. The May series will expire on 26th May. Okay, 26th May was expiry of May series. So, but obvious, what we will do, we will trade in June series. आपको जो position लेनी होगी वो June series में लेनी होगी, because we have only 3 trading sessions left. So we will do the option chain analysis of June series. Now to do the option chain analysis, I prefer this website, which is icharts.in. Okay, you can also do the analysis from NSE website. वहां से भी आप analysis कर सकते हैं. But I prefer icharts.in because this is very easy. So let me open option chain. Okay, now I will show you the historical data. Okay, I will show you Tata Steel 23rd May. Okay, first we need to select historical from here. Okay, यहाँ से आपको select करना है Tata Steel. Okay, June series में trade लेना है. We need to take a trade in June series. Okay, and we have to do option chain analysis on 23rd May because there was a support breakdown on that day. Okay, now here you can see this is option chain in front of you. Okay, at the center we have a strike prices. On your left, okay, there is a call option data, and on your right we have a put option data. Yes, so this is chargeable. So 1600 for 3 months. Okay, 1600 you have to pay for total 3 months quarterly. Okay. Okay, so in Tata Steel, what we will do, we will sell call option, right? The view is bearish, so you can ignore the put option. आप put option के data को ignore कीजिए. Just focus on call option. आप call option के side पे focus कीजिए. Now in this option chain data, guys, 2 columns are very important. Number 1, here you can see OI. So you need to read this as open interest. Okay, इसको आप read करेंगे open interest. So this is one very important column. And second one, you can see OI change. Okay, this is called as change in open interest. Okay, so you can read this as change in open interest. OI, open interest, change in open interest. In the same way, put side भी आप देखिए ये 2 columns से important होते हैं. OI, open interest, and this is change in open interest. But for the time being, we will focus only on call side because the view is bearish on Tata Steel. And at the center here, you can see we have a strike prices. Now focus on OI column. Okay, इस पे आप focus कीजिए and tell me which strike price is having highest OI. सबसे ज्यादा highest open interest आपको किस में दिख रहा है? In which strike price you can see highest open interest? Okay, everyone, do try. Okay, type in chat box ताकि मुझे समझे कि आपको समझ में आ रहा है. Okay, everyone, do try. In which strike price you can see highest open interest? आपको कौन से strike price में सबसे ज्यादा open interest दिख रहा है? 1100. Perfect. So 1100 में आप देखेंगे we have a highest OI. It is automatically highlighted. So this is, that's why I use this eye charts, because the analysis which we do, it becomes very easy because the numbers are auto highlighted. 20,68,050. Now what open interest means? Open interest का मतलब क्या है यहाँ पर? See, open interest means the positions are still open. Okay, the positions are not yet closed. And this open interest table, ये जो आपको पूरी table दिख रही है, this table we have to read from
option seller point of view. Okay, you have to respect this table from option writer, option seller point of view, not from option buyer point of view, because option seller is the guy which takes maximum risk. Because option buyer का जो risk होता है वो होता है limited, right? Option buyers always take limited risk, but option sellers take unlimited risk. So we have to respect this table from seller point of view. Now 1100 में आप open interest check कीजिए, it is 20,68,050. This indicates this 1100 level can work like resistance. So this is the point number one. You can note down. On call side, okay, on call side, wherever you see highest open interest, that level can work like resistance in future. Okay, ये level resistance का काम कर सकती है. So again I take you to the graph. Okay, graph में आप देखिए, on this day Tata Steel closed at 978. Okay, after few days you can see we got a good recovery in this counter. Okay, but till what level it went up? If you see, stock price went up only till 1045. Okay, after this big fall, when we got a recovery, you can see stock price went till 1045 level. So it didn't cross 1100 level because 1100 level was resistance. Okay, 1100 level क्या थी? Resistance. Why? Because सबसे ज्यादा जो writing हुई थी on that day, on 23rd May, when we have a support breakdown because of this major negative news. So on this day we have a call writing in 1100 strike price, 20,68,050. Now these many positions are active on that day. मतलब ये सारे traders क्या expect कर रहे हैं? ये सारे traders expect कर रहे हैं कि टाटा स्टील का जो स्टॉक है in this series, June series, it is likely to settle below 1100. Okay, this is the meaning, this is the interpretation. अगर 1100 strike price में call writing हो रही है, this indicates traders are expecting Tata Steel stock is likely to close below 1100 level. Now, one important point, this data is dynamic data. Okay, it keeps on changing. So you need to focus on this data on daily basis. आपको daily basis ये data के ऊपर focus करना होगा. So as on 23rd May, I can say 1100 is the major hurdle for this counter because of highest open interest. Now let's focus on change in OI. Okay, इसको भी focus करते हैं because this is also very important column. Now tell me again, in which strike price you can see highest change in open interest? Okay, everyone type in chat box, in which strike price we have highest change in open interest. Okay, highest change in open interest. Highest change in open interest. Again, same 1100, right? 1100 again, it is 17,96,475. Now change in open interest means fresh addition. Okay, जो fresh business आया है वो 1100 strike price में आया है. On 23rd May, okay, we got fresh call writing in Tata Steel. Okay, तो total new contracts कितने ऐड हुए थे, total new shares कितने ऐड हुए थे? 17,96,475 shares ऐड हुए थे total on 23rd May. And total OI कितना हो गया? You can see 20 lakh. मतलब day before yesterday इसका अगर OI आप देखेंगे तो कितना होगा? 3 lakh के आसपास होगा. Right, on 22nd May, 1100 strike price, open interest would have been 3 lakhs because on 23rd May these many shares are added, 17,96,475. See, out of 20 lakhs, 17 lakhs to 23rd को ही add हुए. Okay, so major call writing is going on in 1100 strike price. उसके बाद आप देखेंगे तो 1000. Can you see in 1000 strike price? The fresh writing happened on 23rd May. It was 7,32,000. सबसे ज्यादा call writing 23rd May को 1100 strike में हुई. उसके बाद 1000 strike में हुई. Now, can you see both numbers are round off? So generally in round off numbers you will see this huge writing. Okay, call writing या put writing जब भी होती है वो in round off numbers पे होती है. Now, but which strike price we need to select? See, we will not select 1100 strike price. Okay, this is the wall. आप ऐसे समझिए, this is the big wall. Okay, 1100 will be the major hurdle for this counter. And if you want to take a safe trade, okay, always be beyond this wall.
ओके, इसके आप पीछे की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कीजिए. सो व्हाट आई थंब रूल फॉलो, सो लेट मी शो यू व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ टाटा स्टील. आप टाटा स्टील का यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस देखिए कितना है, 978. So what I do, I select that strike price which is at least 20% away from current market price. जो current market price से कितना दूर हो, at least I am saying minimum 20% दूर हो. आप जितना दूर की strike select करेंगे, the more far you will go, the more safe trade you will get. Okay, जितना आप दूर का option sell करेंगे, the more safe trade you will get. So can you please calculate what will be the 20%? Okay, Tata Steel closed at 978. And we need to select a strike price which is 20% up, at least 20% up from current market price, which is 978. So please do the calculation. 978. Okay, 978 का 20% कैलकुलेट करके 978 में आप ऐड कर दीजिए. Okay, please do this calculation. If you do not do right now, how you will do in live market? If you cannot do, you can let me know. I will explain कैसे करना है. Right, 978 का 20% निकाल के आप 978 में ऐड कीजिए, because we need to select a strike price which is beyond 1100. Okay, which is beyond 1100. Right, so it is coming 1175. Now you can select any strike price. Okay, any strike price which is beyond 1175. Okay, कोई भी आप एक strike price select कीजिए जो 1175 के पीछे हो. एटलीस्ट आपको उसमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, हाउ मच रिटर्न यू शुड गेट, एटलीस्ट 1.5% to 2%. ओके, एटलीस्ट आपको 1.5 to 2% रिटर्न मिलना चाहिए. उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस. इफ यू आर गेटिंग रिटर्न्स मोर देन 2%, लाइक 3%, 4%, सो आप और पीछे जाइए. You need to select that strike price which is giving you returns 1.5 to 2%, but at least वो 20% दूर होनी चाहिए. Okay, from current market price. So again, let me show you the screenshot which strike price we sold in Tata Steel. You can see. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेल किया था 1500 call option. See, the far out the money strike was active on that day. जिस दिन ये एक मेजर न्यूज आई, उस दिन पे आप देखेंगे तो 1500 कॉल ऑप्शन भी एक्टिव था. 1500 was 50% away. So the thumb rule is minimum we have to be 20% away. But यहाँ पर आप देखेंगे 1500 call option हमने select किया. Look at the premium. Okay, in last column you can see we managed to sell this as 1.95. Okay, कितने पे sell किया हमने? 1.95. And the lot size of Tata Steel is 425. Okay, 425 into 1.95 आप कीजिए. Okay, type in chat box what will be the answer. 1.95 पे हमने 1500 call option sell किया. The lot size is 425. So how much we got premium? How much the net credit we got? Do the calculation. $425 into 1.95. Okay, 828. Okay, 828. We got 828 rupees as a net credit. And margin requirement to sell 1500 call option was somewhere close to 50,000. Okay, 40 to 50,000 was the margin requirement. And you can see how much we made out of that. So almost 1.5 to 2% हमने कमाया. Arun sir, I explained why 1500, because we need to select a strike price beyond 1175. आप 1175 के पीछे आप एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको 1.5 to 2% का रिटर्न मिल रहा है. Okay, so here you can see 828 premium we got and margin requirement was 40 to 50,000. Okay, margin requirement was 40 to 50,000. I do not remember exactly kitna tha, but even if you consider 50,000, so tell me how much will be the ROI. अगर आपको 828 मिल रहा है on 50,000 capital, okay, 828 rupees if you are earning by deploying 50,000 capital.
tell me what will be the ROI. Okay, what will be the return on investment? So return, आपका रिटर्न कितना है? 828 रुपीज ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो? 50,000. सो 828 डिवाइड बाय 50,000. ओके, जो भी आंसर आए आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ. 828 divided by 50,000 into 100 to get answer in percentage, right? It will be 1.6%. Now tell me, is this a very safe trade or you think it is very risky trade? Okay, on 23rd में आप देखिए 978 पे है प्राइस. Tata Steel is at 978 and we are selling which strike price? We are selling 1500 strike price. So almost 50% away from current market price. Now tell me, what are the chances this trade will go in losses? Okay, ये ट्रेड में नुकसान होगा, क्या चांस है? राइट, इट इज ए वेरी सेफ ट्रेड, काफी सेफ ट्रेड है. ओके, दो रिटर्न्स आप देखिए कम है, बट लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो यू विल अर्न 18 to 24%. These kind of opportunities you can get every month in stock market, चाहे मार्केट बुलिश में हो, बियरिश में हो, कोई भी फेस में हो. ओके, सच अपॉर्चुनिटीज यू विल कीप ऑन गेटिंग एवरी मंथ. हर एक महीने में आपको मिल सकती है ऐसी अपॉर्चुनिटीज. ओके, वेयर यू कैन इजीली अर्न 1.5 to 2%. ओके, आपका कैपिटल भी सेफ है. सो लेट्स से इवन इफ यू हैव 50,000, अगर आपके पास 50,000 भी है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन बैंक FD, ओके, यू कैन लुक फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज एवरी मंथ. इफ यू आर अर्निंग 1.6, तो पूरे साल में इट विल बी 18 to 20% इजीली आप कमा सकते हैं. Okay, I hope the logic is clear. Okay, why Tata Steel we have selected? Because of the news. उसके बाद आप देखेंगे तो सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है. सपोर्ट ब्रेक हुआ है, उसके बाद आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है. When we did option chain analysis, what we found, 1100 में मेजर राइटिंग हो रही है. So we need to select a strike price which is beyond 1100. तो थंब रूल क्या याद रखना है आपको? 20% आपको मिनिमम दूर रहना है फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस. ओके, 20% इज मिनिमम. आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा. ओके, दिस 20% इज मिनिमम. सो विच स्ट्राइक प्राइस वी विल सिलेक्ट? आपको लाइव मार्केट में चेक करना होगा. प्रीमियम के हिसाब से आपको किसमें 1.5 to 2 के बीच में मिल रहा है, दैट स्ट्राइक यू कैन सिलेक्ट. अगर यहां पर 1500 की जगह वी कुड हैव सोल्ड 1400 आल्सो, बट इन 1500 वी आर गेटिंग 1.5 to 2%. दैट्स व्हाई वी selected 1500, not 1400. आप 1400 सेलेक्ट करते तो थोड़ा और ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू 1500. The more far you will go, the more safe trade you will get. Okay, this is the thumb rule you have to remember. Okay, now next stock you can see is Divi's Lab. Okay, now again why we selected Divi's Lab? Here you can see support breakdown. फिर से आप देखेंगे तो ये स्टॉक में भी देखिए on this day what happened, support breakdown. Okay, let me open the graph of Divi's Lab now. Okay, so this is Divi's Lab. On this day you can see we got support breakdown. Now what is the reason? ये स्टॉक में भी आप देखिए सपोर्ट ब्रेक क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या था? Can you see this E which stands for earnings? ओके, यहाँ पर E आपको दिख रहा होगा बॉटम में. ओके, E stands for earnings. तो ये कंपनी ने क्या किया था? यू कैन सी ऑन 23rd May इट अनाउंस क्वार्टरली रिजल्ट. अपने अर्निंग्स उन्होंने अनाउंस किए थे एंड अर्निंग्स जो थे वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे नहीं थे एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी अ वेरी बिग फॉल. 23rd May को ही आप देखेंगे ऑन दिस डे ये स्टॉक काफी गिरा था, 9.45% गिर गया था. In one day, stock price went down almost 9.45. Next day, okay, next day भी आप देखेंगे another 6% fall. Okay, another 6% fall. So this was a support breakdown. So since beginning of 2022, यहाँ से एक बार स्टॉक ने सपोर्ट लेके बाउंस दिया था अच्छा खासा. Again it came down in the month of February. फिर से वही लेवल से बाउंस दिया, you can see. Okay, now this time it finally break. So on this day look at the current price. इसका आप current price check कीजिए कितना है. On this day stock closed at 3661. Okay, 3661 पे जाके stock बंद हुआ. Now what we will do, once we know this stock has given a support breakdown, तो उसमें अपने को call option sell करना है. Okay, but we need to do option chain analysis. Okay, so I will open
DV slab. अब ये देखिए इसमें सपोर्ट कब ब्रेक हुआ, यू कैन सी देयर इज अ सपोर्ट ब्रेकडाउन ऑन दिस डे which is 24th May. Okay, so this is 24th May option data. Quickly tell me in which strike price you can see highest call writing. Okay, कौन से strike में सबसे ज्यादा call writing हो रहा है? Right, 4,000, very simple. In 4,000 strike, 1,93,400 shares are active. Or out of 1,93,000, 1,62,400 shares are added on 24th May only. So again, you can see 4,000 is a round off number. इसके लिए सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग एक राउंड ऑफ नंबर में हो रहा है which is 4,000. So what was the price on 24th में? इसका प्राइस देखिए कितना, it is 3661. Okay, 3661 and call writing कहां पर हो रही है? 4,000. So these traders what they are expecting? They are expecting this counter is likely to settle below 4,000 in June series. Look at the premium at that time, it was 90.50. Okay, इसका जो lot size है it is 100. Okay, Divi slab has a lot size of 100. Now what we will do? We will do the 20% calculation. Okay, 3661 का 20% निकाल के ऐड कीजिए आप 3661 में. Okay, we need to select strike price which is beyond 4,000, right? It will be 4,400 now, but we don't have to sell 4,400. Okay, you need to do some calculation. आप एक ऐसी strike price select करेंगे जो आपको 1.5 to 2% रिटर्न देगी. Okay, 1.5 to 2%. So based on this calculation, you can see what we did. Okay, which strike can you see we have sold? Okay, कौन सी strike price sell की हमने? 4,400 या उसके पीछे की strike price आपको select करनी है. The more far you will go, the more safe trade you will get. Can everyone see which strike price we have sold? Type in chat box कौन सी strike price दिख रही है in Divi slab we have sold. 5,000, right? We have sold 5,000. What is the current market price? You can see current market price क्या है? 3661. So can you do this calculation? ये जो 5,000 strike price है, ये कितना दूर है 3661 से? This 5,000 strike price is how much distance away from 3661? Okay, do this calculation. Okay, please do this calculation. This 5,000 strike price is how much distance away from 3661? Okay, percentage wise आपको निकालना. Okay, percentage wise distance you need to take out. इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता चलेगी कितना सेफ ट्रेड हम लोग ले रहे हैं. सो यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन. आप कैलसी लेके बैठिए साथ में, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. 5,000 स्ट्राइक प्राइस वी हैव सोल्ड. ओके, माइनस कीजिए आप 3661 बिकॉज द डिवी स्लैब का जो प्राइस है वो कितना है? 3661. तो ये कितना दूर है? 1339 दूर है. ओके, 1,339 रुपीस दूर है 5,000 से. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, you need to divide this 1339. ओके, 1339 को आप डिवाइड कीजिए करंट प्राइस से. ओके, करंट प्राइस से आप इसको डिवाइड कीजिए एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100. इसको आप इनटू 100 करेंगे तो यू विल गेट आंसर 36.5. ओके, 36.5%. मतलब अगर डिवी स्लैब, ओके, डिवी स्लैब यहां से 3661 से ये वापस ऊपर जा रहा है, 36% ऊपर जा रहा है, तब आपको नुकसान होगा. ओके, तब आपको नुकसान होगा. बट यू कैन सी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है. कैन यू सी ये रेजिस्टेंस कितना है? 4600 के आसपास रेजिस्टेंस है. लेट्स से यहाँ से स्टॉक बाउंस भी हो गया तो अगेन यू नो इट कैन फेस रेजिस्टेंस एट 4600. एंड विच स्ट्राइक वी हैव सिलेक्टेड? 5000. हमने तो ये लेवल सिलेक्ट किया 5000 बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस. 4600 के ऊपर भी आप देखिए रेजिस्टेंस आ रहा है 5000. सो दिस स्ट्राइक वी हैव सिलेक्टेड. नाउ टेल मी 36% आपको क्या लग रहा है? कैन स्टॉक रिकवर 36% आफ्टर अ बिग सपोर्ट ब्रेकडाउन? एक नेगेटिव न्यूज भी है. सो व्हाट आर द चांसेस इट कैन रिकवर? सो
The point is it looking like a safe trade or it is looking like a risky? Okay, because 36% दूर है स्टॉक. So again very less chance है कि वो ऊपर जाएगा. देखिए अगर ऊपर भी गया, even if next day stock recover, let's say 5%, 8%, 10% भी recover हो गया, आपका जो प्रीमियम है it will not impact much. Okay, 5,000 strike price काफी दूर है. Okay, so far OTM options do not react. आपको काफी ज्यादा टाइम भी मिल जाता है. अगर आपको पोजीशन में कुछ एडजस्टमेंट करनी है, यू कैन डू द एडजस्टमेंट. Even next day, if you have a gap up opening, stock went up 8%, 10%. Okay, 5,000 strike will not react very much because वो 36% दूर है. अगर 10% रिकवर भी हो गया तो still 26% का डिस्टेंस है उसमें. Okay, so let's see how much premium we got. You can see we got 6.65 premium. Okay, 100 is the lot size. तो लगभग इसमें अपने को मिला 665 rupees. And again, the margin requirement is somewhere close to 40,000. Okay, जितना आप दूर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, okay, the margin requirement is lesser. ATM option, at the money option have high margin requirement. If you want to sell ATM option, you need to pay very high margin. But when you are selling OTM option, okay, far out the money option, okay, इतना margin आपको नहीं पे करना होता है. 40-50,000 में आपका काम हो जाएगा. So even for Divi's Lab, okay, margin was 40-45,000, not more than that. अगर आप 45,000 भी ले लें, tell me how much return on investment we are getting. Okay, do the calculation. Let's say we are earning 665 rupees on 45,000 investment. आप 45,000 block करके you are making 665 rupees. Okay, how much is the return on investment? Right, again it is very close to 1.5. Now though we are getting very close to 1.5, but look at the safety. Okay, इसमें आपको safety ज्यादा मिल रही. If you want to take more risk, अगर आपको risk लेना है, so आप 4600 का भी option sell कर सकते हैं. Why 4600? Because you can see this zone was resistance. So instead of going for 5,000, you can go for 4,600. But ये थोड़ा risky हो जाएगा. आप जितना दूर का select करेंगे, that will be much better. Now one last stock I will show you, Mahindra and Mahindra. Okay, this I will explain you. Okay, now you guys tell me why we have sold Mahindra and Mahindra आपके हिसाब से. What can be the reason? Okay, you can see on screen. And why we have sold put option in this counter. Right, this was breakout. Perfect. Okay, we got a resistance breakout on upside. इसमें आप देखिए resistance break हुआ. Look at this level. What was this level? 970 के आसपास ये लेवल था. In October 2021 यहाँ से स्टॉक नीचे आया. Again in the month of November, same level resistance लेके नीचे. Okay, here also you can see it made a resistance, but finally we got a breakout. So on this day, this stock has given not only breakout on daily time frame. Okay, इसने weekly time frame पे भी breakout दिया था. इसने monthly time frame पे breakout दिया था. On monthly time frame also we got a breakout. Can you see the date at bottom? 30th May. So this is at the end of month. Okay, this is 31st May. तो ये दिन पे आप monthly graph भी देखेंगे तो it was a breakout stock even on monthly time frame. Okay, weekly time frame पे भी breakout, monthly time frame पे भी breakout, daily time frame पे भी breakout था इसका. Right, resistance breakout, view bullish. So what we will do, we will go for put option. Now 30th में the price is 998. आप 998 मतलब आप 1000 ही ले लीजिए. So इसमें आपको क्या करना है, 20% नीचे. Okay, minimum 20% distance रखना है. 20% नीचे की आप strike price sell करेंगे. So let's count this number as 1000. Let's say on this day stock closed at 1000. तो आप कौन से strike का put option sell करेंगे? Okay, which strike you will prefer?
ओके मिनिमम 20% के हिसाब से आप बताइए which strike we will prefer, right? 800. So you can see in Mahindra and Mahindra we exactly sold 800 put option. Okay, 800 because इसमें प्रीमियम्स ज्यादा अवेलेबल नहीं थे. अगर हम लोग 800 के नीचे जा रहे थे लाइक 750 700, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट गुड. उसमें अपने को 1% ही मिल रहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इट वाज ऑन हायर साइड. इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा ऊपर की तरफ था. So that's why we selected 800 put option. 700 is the lot. Okay, 1.65 we got. Okay, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.65 अपने को मिला. 700 is the lot size. देखिए ब्रोकरेज एंड टैक्सेस अरुण सर आप वन साइड ट्रेड लेंगे, राइट? यू विल टेक ट्रेड ओनली वन साइड. वी डोंट हैव टू डू स्क्वायर ऑफ आल्सो बिकॉज ऑल दीज ऑप्शंस विल बिकम जीरो. सो ऑन एक्सपायरी डे अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं भी किया तो वो भी आपका ब्रोकरेज बच जाएगा. एंड when you take one side trade आपका ब्रोकरेज रहेगा 15 रुपीज और 20 रुपीज. ओके दिस इज अलाइज ब्लू अकाउंट. इसमें 15 रुपीज ब्रोकरेज है. वन ट्रेड विल कॉस्ट यू 15 रुपीज ब्रोकरेज. आप अदर चार्जेस भी ऐड कीजिए. ओके यू कैन ऐड 5 रुपीज 10 रुपीज मोर, तो वो 20-25 रुपए हुआ. सो ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट. ओके 20-25 रुपीज आप इसमें से माइनस कीजिए. 665 में से आप 25 रुपीज माइनस कीजिए तो भी आपको 640 बच रहा है. ओके इन केस ऑफ डिवी स्लैब 100 इज द लॉट से 665, 25 माइनस करेंगे 640 यू विल बी. ओके नाउ हियर यू कैन सी मेट्रोपोलिस. ओके पिडिलाइट, ये दो स्टॉक्स भी देख लेते हैं. सो एज आई टोल्ड यू आपको ट्रेंड एनालिसिस भी देखना होगा. ओके आई विल क्विकली ऐड मूविंग एवरेज. ओके मूविंग एवरेज लगा देता हूं मैं 20 50 200. द ब्लू वन इज 20 मूविंग एवरेज, ब्लैक जो आपको दिख रहा है 50 और ये जो येलो आपको दिख रहा है दिस इज 200. नाउ टेल मी द ट्रेंड. आपको ट्रेंड क्या लग रहा है? दिस इज मेट्रोपोलिस. सो व्हाट इज द ट्रेंड इन दिस काउंट? ओके कैन यू सी द ट्रेंड इज डाउन. ठीक है ट्रेंड डाउन है तो आपको क्या करना है? ओके व्हेन स्टॉक इज ट्रेडिंग इन डाउन ट्रेंड, अगर कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है आपको क्या देखना है? सपोर्ट ब्रेक डाउन देखना है. कैन यू सी दिस इज सपोर्ट ब्रेक डाउन. ये दिन पे सपोर्ट ब्रेक हुआ था. ओके द ट्रेंड इज डाउन. यहां पर उसने स्विंग लो बनाया था, अगेन इट वेंट अप. व्हेन इट केम डाउन यू कैन सी इट ब्रेक द प्रीवियस सपोर्ट. उसने प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किया एंड यहां से जब बाउंस हुआ, ओके जस्ट ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन. आप प्राइस एक्शन देखिए ध्यान से. व्हेन स्टॉक प्राइस बाउंस्ड फ्रॉम दिस लेवल, कहां पर जाके उसने रेजिस्टेंस दी है? कैन एनीवन टेल मी वेयर इट टुक रेजिस्टेंस? यहां से जब बाउंस आया प्राइस में, ओके वेयर इट टुक रेजिस्टेंस, यहां पर आप देखिए साइडवेज हो गया. सो व्हाई प्राइस वेंट साइडवेज ओवर हियर? यहां पर ही साइडवेज क्यों हुआ? 200 मूविंग एवरेज परफेक्ट. ओके 200 मूविंग एवरेज पे आप देखिए रिजेक्शन दिया, साइडवेज हो गया, अगेन केम डाउन, यहां पर सपोर्ट ब्रेक किया. ओके दिस वाज 18th मई. ओके 18th मई को सपोर्ट ब्रेक हुआ. तो यहां पर भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं कॉल. देखिए यहां से नीचे आया, इट मेड अ स्विंग लो बनाया, अगेन इट वेंट साइडवेज. फिर यहां पर देखिए स्विंग लो ब्रेक हो गया. यू कैन सी हियर इट ब्रेक द स्विंग लो. सो 13th 14th जून यू कैन सी यहां पर स्विंग लो ब्रेक हो गया. तो यहां पर भी आप ऑप्शंस में एंटर कर सकते हैं जब जब सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, बिकॉज द ट्रेंड इज डाउन. सो जब जब सपोर्ट ब्रेक होगा यू कैन लुक फॉर कॉल ऑप्शन. ओके सेलिंग कॉल ऑप्शन. ओके नेक्स्ट इज पिडिलाइट इंडस्ट्री. ओके पिडिलाइट इंडस्ट्री में देखिए क्या है ट्रेंड. ओके डू लेट मी नो व्हाट इज द ट्रेंड इन पिडिलाइट. ओके ब्लू 20, ब्लैक 50 एंड येलो आपको दिख रहा है 200. सो व्हेनेवर यू सी प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेज, किसी भी स्टॉक में अगर आपको प्राइस दिखे 20, 50, 200 के नीचे, मतलब ट्रेंड इज डाउन. उस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन है.
Now I have marked this candle. ये candle पे मैंने arrow mark किया, you can see. So on this day, you know what happened? There was a support breakdown. Okay, ये दिन पे देखिए support break हुआ था. Plus आप देखेंगे तो ये trend भी आप देखेंगे तो down trend है. Okay, what was the level? 2050 की level. Okay, it is 2050 level. So on this day, okay, we have sold option in Pidilite. आप देखेंगे Pidilite में हमने कौन सा ऑप्शन सेल किया? 2400 का ऑप्शन सेल किया. ओके, व्हाई 2400? लेट्स सी. ओके, यू कैन सी नाउ क्लोजिंग प्राइस इसका आप देखिए कितना है, 1999. सो लेट्स कंसीडर 2000. तो 2000 का 20% कितना होगा? व्हाट विल बी द 20%? ऑन दिस डे प्राइस क्लोज्ड एट 2000. ओके, 2000 का 20% विल बी हाउ मच? ओके, एवरीवन डू द कैलकुलेशन. ओके, 2000 का आपको 20% निकालना है. यू नीड टू फाइंड आउट 20%. इट विल बी 400. आप 2000 में 400 ऐड कीजिए. ओके, सो हियर यू कैन सी 2400. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि टाटा स्टील में वी हैव सोल्ड 50% अवे. ओके, इन Divi's Lab the distance was 36%, right? बट इन Pidilite, महिंद्रा एंड महिंद्रा, Pidilite में अगर आप देखेंगे तो उतना डिस्टेंस नहीं मिल रहा है अपने को. सो व्हाट कैन बी द रीजन? ओके, जस्ट अप्लाई योर ब्रेन. आप बताइए व्हाट कैन बी द रीजन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग मच डिस्टेंस इन Pidilite. उसमें अपने को 20% ही मिल रहा है डिस्टेंस. बट इन टाटा स्टील Divi's Lab यू कैन सी 36% तक भी डिस्टेंस था. ओके, व्हाट कैन बी द रीजन? See, the reason is time value. Okay, number of trading sessions. So Tata Steel और Divi's Lab दोनों ट्रेड्स कब एक्टिव हुए थे? इन द मंथ ऑफ मई. मतलब जून सीरीज स्टार्ट भी नहीं हुई थी एंड वी गॉट द ट्रेड फॉर जून सीरीज. सो काफी ज्यादा ट्रेडिंग सेशंस बचे थे, तो इसके लिए आपको प्रीमियम भी मिल गया. बट हियर यू कैन सी Pidilite, इसमें ट्रेड आपको कब मिल रहा है? 17 जून को ट्रेड मिल रहा है. एंड व्हेन वी हैव एक्सपायरी, ओके, इसका आप एक्सपायरी देखेंगे तो कब है? व्हेन जून सीरीज विल एक्सपायर? 30th June. सो हाउ मेनी ट्रेडिंग सेशंस वी आर गेटिंग? आप देख रहे हैं कितने ट्रेडिंग सेशंस आपको मिल रहे हैं. 17 जून को ट्रेड मिल रहा है. सो ये 5 ट्रेडिंग सेशंस और ये 4. ओनली वी हैव 9 ट्रेडिंग सेशंस. सो दैट्स व्हाई तो आपको इतना डिस्टेंस नहीं मिल रहा है. 20% दूर का आप स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज 9 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक प्राइस 20% ऊपर जाएगा, कम चांसेस है. Now, as you are getting this trade in the middle of month, so do not expect 2%. आप 2% मत expect कीजिए. Maybe you will not get 1.5% also. So you can expect 1 to 1.5%. Okay, because ये जो trade कब मिल रहा है अपने को? Middle of month में मिल रहा है. तो इसमें आपको return on investment कितना मिलेगा? Between 1% to 1.5%. But it is very safe trade because 9 trading sessions are left. तो यहां से आप देखेंगे भले रिकवर हुआ है. कैन यू सी दिस स्टॉक हैज रिकवर्ड फ्रॉम 2000. राइट नाउ यू कैन सी इट इज ट्रेडिंग एट 2169. बट व्हाट विल हैपन टू प्रीमियम? बताओ प्रीमियम पे क्या होगा? आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? ओके, डू लेट मी नो व्हाट विल हैपन. फ्रॉम 2000 it went till 169. ओके, 1 2 3 4 5 5 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है. मतलब दिस इज फेल्ड सपोर्ट ब्रेकडाउन. सपोर्ट ब्रेक तो किया था बट वापस रिकवर हो गया. बट व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रीमियम? देखिए 9 ट्रेडिंग सेशंस बचे थे. अभी नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस आप देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है. स्ट्राइक प्राइस हमने 2400 का रखा है. ओके, द स्ट्राइक प्राइस इज 2400. यहां पर है आपका स्ट्राइक 2400. तो बताइए प्रीमियम्स बढ़ेंगे कि प्रीमियम्स कम होंगे? अब बाकी 4 ट्रेडिंग सेशंस ही बचे. right? Premium will fall. Still premium will fall. Okay, भले प्राइस ऊपर जा रहा है but the distance is so big कि probability 2400 तक जाएगा कम है. Okay, so let me show you the current premium. इसका हम लोग प्रीमियम देख लेते हैं.
ओके सो 1.65 पे हमने सेल किया था उसको, एंड राइट नाउ यू कैन सी इट इज ट्रेडिंग एट 0.8। ओके 0.8 पे ट्रेड कर रहा है। तो इवन आप देखिए प्राइस ऊपर गई है बट फिर भी इसका प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे फेवर में है, एंड 250 इज द लॉट साइज। तो 250 इंटू 1.65, यहां से अपने को लगभग 412 रुपीज मिल रहा है। ओके द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अगेन 40,000 के आसपास है इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट, 35 टू 40। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका मार्जिन रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, क्योंकि हम लोग फार आउट द मनी सेलेक्ट करें। ओके नाउ टेल मी गाइस, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जो भी है आप पूछिए। ओके इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क नाउ। सो वंस अगेन आई एम सेइंग ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको हर महीने मिलेगी स्टॉक से। Okay, you will keep on getting such kind of opportunities from market. So instead of keeping your funds in bank, fixed deposit, recurring deposit, you can start with 1 lakh. आप भले 1 lakh से start करके देखिए। Okay, in 1 lakh you can easily take 2 positions minimum। आप 2 positions तो अच्छे से ले सकते हैं 1 lakh में। And see if you can earn up to 1500, आप 1500 तक earn कर पा रहे every month on 1 lakh amount, एंड धीरे धीरे उसको आप फिर इंक्रीज कर सकते हैं। ओके सो गाइस डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सो कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है? यू नीड टू लुक फॉर सपोर्ट ब्रेकआउट, ओके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेकडाउन। ओके ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सो व्हेन यू ओपन iCharts.in, जब आप iCharts.in का होम पेज ओपन करेंगे, ओके व्हेन यू ओपन होम पेज, ओके हियर यू कैन सी लॉन्ग बिल्टअप। ओके यहाँ पर आपको दिख रहा है शॉर्ट बिल्टअप। So you need to focus on these 2 columns. Okay, long built up, short built up. आपको टॉप 5 स्टॉक्स दिखेंगे। ओके लॉन्ग बिल्टअप में टॉप 5 स्टॉक्स, शॉर्ट बिल्टअप में 5 स्टॉक्स आपको दिखेंगे। ओके राइट नाउ यू कैन सी वी हैव ओनली 2 स्टॉक्स इन शॉर्ट बिल्टअप, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट बिल्टअप हुआ नहीं है काफी सारे स्टॉक्स में। लॉन्ग बिल्टअप में आप देख सकते हैं दीज आर द टॉप 5 स्टॉक्स। सो व्हाट यू कैन डू, इनका आप ग्राफ ओपन करके क्रॉस चेक कीजिए, ये स्टॉक लॉन्ग बिल्टअप में क्यों आ रहा है? इज दिस बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट? ये स्टॉक्स शॉर्ट बिल्टअप में क्यों दिख रहे? इज दिस बिकॉज ऑफ सपोर्ट ब्रेकडाउन? सो दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन पिक स्टॉक, ऐसे भी आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। ओके कोई स्टॉक लॉन्ग बिल्टअप में है, हो सकता है इनमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ हो ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर ये स्टॉक शॉर्ट बिल्टअप में है, हो सकता है इसमें सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ हो। तो यहां से भी आप पिक कर सकते हैं स्टॉक्स। यस अभिजीत सर। ओके सो गाइस आई एम डन विद दिस सेशन, आई विल शेयर दिस पीपीटी। ओके ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू। एंड फ्रॉम जुलाई सीरीज, ओके जुलाई सीरीज जब स्टार्ट होगी तो मैं भी कुछ स्टॉक्स आपको बताऊंगा, ओके इन विच आई एम टेकिंग पोजिशन पर्सनली, मुझे जो सेफ लग रहे हैं, जो 20% से ज्यादा दूर है। ओके आई विल शेयर दोज स्टॉक्स विथ यू। तो उसमें भी आप एनालिसिस कीजिएगा, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप चेक कीजिएगा। सो फॉर नेक्स्ट 3 months, ओके आई विल शेयर सच अपॉर्चुनिटीज विथ यू। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप भी अपने एंड से फाइंड कर सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज। ओके सो नाउ न्यू पोजिशंस वी विल टेक वंस जुलाई सीरीज विल स्टार्ट, उसके बाद ही हम लोग न्यू पोजिशंस लेंगे। सो लेट दिस जून सीरीज गेट एक्सपायर, न्यू पोजिशंस जब स्टार्ट होंगी, न्यू सीरीज स्टार्ट होगी, तब हम पोजिशंस लेंगे एंड आई विल शेयर द अपॉर्चुनिटीज विथ यू। यस प्रशांत सर, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए चैट बॉक्स में।
ओके वैभव सर, ये अपॉर्चुनिटीज आपको फाइंड करनी है स्टॉक्स में। यस अभिजीत सर, मैंने आपको आंसर दिया था पहले भी, यस। निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, दिस इज फॉर स्टॉक्स प्रशांत सर। ओके ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको स्टॉक्स में मिलेंगी। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल्स होते हैं स्टॉक्स के साथ, क्योंकि नाउ डेज 400 पॉइंट्स इज नथिंग फॉर निफ्टी टू गिव अ गैप अप गैप डाउन। सो स्टिक इन स्टॉक्स, आप स्टॉक्स में बने रहिए। Okay, so thank you guys for taking out time joining this session. Thank you very much. I will share the recording PPT in some time on your WhatsApp.